मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। अभिजीत के साथ मेरी वार्तालाप कंटिन्यूड है और वो मैंने आपको दूसरे वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पहला वाला जो वेस्ट बंगाल का मुद्दा था वो बहुत ही एक सीरियस मुद्दा था, तो मुझे उस पे उनके व्यूज चाहिए थे, तो वो मैंने पहले पोस्ट कर दी थी। सो अभिजीत, टेल मी समथिंग अबाउट दिस यूक्रेन एंड रशिया। इज द वर्ल्ड गोइंग टू face the crisis or only Ukraine is going to face the crisis? Only Ukraine will face the crisis. देखो, अमेरिका को ना हर चीज वो यूजर कहते हैं ना. America is the consummate user. There isn't a country or geography that they haven't used for their own interests. Ukraine is one more of them. They want to create an Afghanistan, a kind of Afghanistan or Vietnam for Russia out there. They think they're succeeding. I don't think they are. They definitely in the short term they are succeeding. In the longer term, I don't think they are, but it is what it is. But that's what's happening. Basically, America will fight till the last Ukrainian man, woman, and child. Okay. And you think India is going to benefit from the whole thing or China is going to benefit? The only beneficiary here is China. For us, it's a strategic nightmare because our foreign policy has always aimed to do सास भी कभी बहू थी with Russia and China. ठीक है, हमको हमारा इंटरेस्ट हमेशा था कि रशिया और चाइना के बीच में झगड़ा हो. ठीक है ना, वो अब खत्म हो गया है. Okay, and these American screwballs, they used to keep saying, "Oh, you don't understand. You know, there's so much keeping them apart. They will never come together." Now they've come together like never before. And this woman, Victoria Nuland, who's almost single-handedly responsible for what started off in Ukraine in 2014, she comes to Delhi at this time, meets all these lefty bloody activists, then goes about, incidentally, that's exactly what she did in Ukraine in 2014, then gives interviews to all these chudel leftist outlets, and then says, what, we will supply you with weapons. तो खुद हमारे घर के बाहर गुंडा खड़ा करके बोल रही है, हमारे को कॉल करो, हम पैसा के लिए तुम्हारे को ये गुंडे को निकलवा देंगे. ये हफ्ता रैकेट जो ये सस्ते सस्ते लोग चलाते हैं ना, थग्स चलाते हैं ना, हर इसमें प्रोटेक्शन रैकेट्स, यही चला रही. But don't you think America is looking very weak and it's getting exposed? Their weakness is getting exposed. They're looking and sounding very confused. The kind of statements the vice president is giving or the president is giving, they're weird. They are, because if you look at the way almost every country came together over the invasion of Iraq, Iraq's invasion of Kuwait in 1991, the UN Security Council authorized the use of force and everything. Do you remember that? Look how far away we are from there today. Right, 141 countries that represent about 3.5 billion people, well, 3.3 billion people, voted for America's resolution. But 35 countries which either voted for Russia or abstained from the resolution represent 4.5 billion people, or 56% of the world's population. So 56% of the world's population does not agree with America. Right? So, but remember, it also shows you how just 1.1 billion people, 1.1 billion, why not 3.3? Well, 1.1 billion is the combined total of America, Canada, NATO, Europe, Australia, Japan, and South Korea. How disproportionately they control the world's economies and the world's public goods. Things that we take for granted. तो रशिया का ये क्या हालत हुआ है, तो देख लो हमारा क्या हालत कर सकते. But मेरे को still, मेरे को एक अमेरिका का, like I was really in awe of that country, super power and all that. थोड़ा सा even मतलब because of the elections, the way it happened, the whole procedure of the election happened, and also about that Black Lives Matter. इन सब के बाद मुझे तो अमेरिका exposed lag raha hai more than, and even where freedom of expression and speech is concerned, the way Washington Post and New York Times, the way they're handling the situation, the way they write, articles and everything is very leftist. And so I don't think so. मुझे इतना अमेरिका को देख के लग रहा है कि yeah, it's really the country now.
No, look, I think America's greatness is it's so powerful that in spite of all these, ultimately, in say 20, 25 years, these people like Washington Post, New York Times, they will turn America into Venezuela. But till then, for those 25 years, America was and remains the paramount power. Okay, so let's be very clear that one thing that has come out very clearly is still, in spite of all its divisions and differences, America is a mighty awesome power. So now, Abhijit, let's talk about Kashmir files. ये आपने खूब सारा पढ़ा होगा ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे, और वीडियोस भी आ रही हैं. द वे द few media, few not the whole section, but the cabal is there, जो पूरा टाइम यही बोली जा रही है कि कश्मीर फाइल्स बनाई है, इसके जो पैसे आए इसको डोनेट कर दो, ये कर दो. ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये देखिए, ये इन्होंने कभी भी बोला था राणा अयूब को कि उसके गुजरात फाइल्स का ये गुजरात राइट विक्टिम्स को डोनेट करो? नहीं ना. बस कश्मीर फाइल्स का प्रॉफिट क्यों डोनेट करना है मैं बताता हूँ आपको. दे वांट टू सी टू इट that anybody making a right-wing movie that busts their narrative will not make a profit. So there will be no incentive. So there will be no incentive for the next guy. See, they tried to prevent it from becoming a market success. Once it became a market success, they want to take away the money of the market success and see to it that no person will be able to enjoy profits from making this kind of a movie ever again. Okay, so I called up Vivek Agnihotri and told him, Vivek, just for this तुमको इतना सारा पैसा मिला है, बॉस तुम अपने लिए और पल्लवी के लिए एक एक रोल्स रॉयस फैंटम खरीदोगे और अगले एक साल वही रोल्स रॉयस फैंटम में ही घूमोगे. तुम जाके उसी रोल्स रॉयस एक बंबई में खरीद के रखोगे अपने लिए एक और पल्लवी के लिए एक, और एक दिल्ली में खरीद के रखोगे अपने लिए एक और पल्लवी के लिए एक, और उसी में तुम जेएनयू के अंदर जाके चक्कर लगा के आओगे. ठीक है. I told him, unless you do that, these people will think that they have got away with trying to destroy the profitability of any movie or book that goes against their narrative. Abhijit, पहले तो Bollywood didn't react to the movie. They did not help. Vivek Agnihotri was looking for finance. उसको पैसा नहीं मिला, ये मूवी के लिए फाइनेंसिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. उसके बाद बॉलीवुड रियलाइज कि दे वर बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑन सोशल मीडिया एंड यू नो देयर हिपोक्रेसी गॉट एक्सपोज्ड. तो क्योंकि वो जब तक विक्टिम कार्ड खेलने वाली मुस्लिम्स के ऊपर मूवी बनाते हैं, इस्लाम के ऊपर मूवीज बनाते हैं, उसके लिए वो लोग एक एक बॉलीवुड का एक्टर आके बाहर उसके लिए प्रचार करता है. इसके लिए दे डिडंट डू इट. तो इसके बाद व्हेन दे रियलाइज कि ये क्या हो रहा है, पब्लिक का दिस not only did they not do it, remember Kapil Sharma refused to run the promotion for it. Yeah, the reality shows also Anupama Chopra and Vidhu Vinod Chopra went out of their way to scuttle it. Yeah. Okay. Now they are all exposed. हाँ, they're all exposed. अब उनका फिर मैंने देखा सोशल मीडिया पे they all come and अब वो लिखने लग गए कि they all came on social media and then they started saying कि instead of appreciating the content of the movie and talking about the theme of the movie, they're all talking about the collection of the movie. Big success, congratulations Vivek Agnihotri यानी करके. उसमें फिर उसके बाद आया आमिर खान. अब आमिर खान जो कभी कुछ बोलता नहीं है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वो आके सबको बोल रहा है कि इस मूवी को जरूर जाइए देखने, ये करके. इसका क्या रीजन है? इतना ये जो हुआ ना, बदले हैं, ऐसे यू टर्न हुआ, इसका क्या रीजन? देखो आमिर खान इज विथ हुएवर इज इन पावर. ठीक है ना. जब कांग्रेस की सरकार थी तब बोल रहा था कि मोदी मास मर्डरर है, ये है वो है. आपने तो वो इंटरव्यू देखा ही होगा जहां वो शेखर गुप्ता के साथ रेड फोर्ट में उसको ये बुला रहा है, वो बुला रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. अब सडनली ये क्या परिवर्तन आया है? बट यू नो आई कमेंड इट बिकॉज पीपल्स स्टांसेस कीप इवॉल्विंग. I don't know if his stance has actually evolved based on watching the movie and then, or not watching the movie but hearing about it and then reading up the reality of it, or is it an opportunistic move? Either way, I think they all now realize which way the wind is blowing, so they're all going to shut up. And my basic thing is from now on, Vidhu Vinod Chopra must not be given any bank loans for his movies.
I think Sanghi should go out of their way to pirate the earlier releases of his movies and release them on torrents and destroy his profitability to the point where every bank thinks 10 times कि भाई इसका इतना जल्दी pirate copy निकलने वाला है, इसको तो finance देने का ही बनता नहीं है. नहीं, और ये ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि इसकी लाल सिंह चड्ढा करके मूवी आ रही है आमिर खान की, तो इसको लग रहा है कि ये सारा एंगर जो है लोगों के अंदर वो उसकी मूवी पे ना निकल जाए. सो like you're saying, he can be an opportunist and वो इसका फायदा उठाने को. So I have no issues with that. So this is why I want Vivek Agnihotri to make money. This is why I want him to buy a Rolls Royce and I want him to buy Pallavi. See, I've never begrudged other people their money. I don't know why we treat money as something dirty. I think people who make movies that talk to us, the Hindu right, Rolls Royce to kya, we should see to it that Vivek Agnihotri has his own personal Airbus A330 private jet. Okay, now you tell me, Abhijit. Okay, but 1 second, I haven't finished yet. It's very, very important that Amir Khan now knows that the profitability of his movie depends on giving a pat on the back to the right-wing narrative. That's a very good thing. That's a very good thing. I applaud Amir Khan for it. Agar opportunism ke wajah se hi kiya ho, I have no issues with it. Karo. ठीक है, but my thing also is कि you should see to it कि विनोद चोपड़ा का अगला फिल्म एकदम फ्लॉप हो, इसके पायरेटेड कॉपीज बन के एकदम मार्केट को तहस नहस कर, कि कोई भी बैंक, कोई भी फंडर जो उसको पैसा दे रहा है विनोद चोपड़ा को या अनुपमा चोपड़ा के उस घटिया फिल्म कंपेनियन वेबसाइट को, उनको पता होना चाहिए कि उनका पैसा जल के राख बन के पब्लिक टॉयलेट की किसी भी ज्यादा बदबूदार टट्टी किसी से ज्यादा बदबू आना चाहिए उनके पैसे से. Abhijit, you're so funny. Too much. Let me ask questions. अच्छा अभिजीत, आप ये बताओ मुझे, क्या ये मूवी तक ही रह जाएगी और लोगों के अंदर जो एक एंगर है और एक फ्रस्ट्रेशन है और जो इतने पॉलिटिशियन एक्सपोज हुए हैं सब हुए, या ये मूवी फर्दर जाके कुछ गवर्नमेंट कुछ करेगी जो परपिट्रेटर्स थे उनके अगेंस्ट, या कुछ कोर्ट कुछ करेगा परपिट्रेटर्स को, कि ये मूवी बस यहीं तक खत्म हो जाएगी? अरे, this has now become a movement, boss. You realize what has just happened? We have shown that it is profitable to make a movie like this. Finally, after 8 years, the BJP came out in support of something that enhances the right narrative, which they never used to do. वो बैठ के knitting करते थे या पता नहीं क्या करते रहते थे, भजन कीर्तन गाते थे. Finally, they've come out in support of the movie. It has become a huge hit. Now we need to make Mopla files. We need to make Mari Jhapi files. We need to make the 2021 Bengal files. We need to be making the Godhra files. We need to be making the Gujarat files. Nobody wants to talk about the 200. Everybody wants to talk about the 750 Muslims who died. Nobody wants to talk about the 250 Hindus who died. वो हिंदू लोग कैसे मरे थे? हैं, उनको कौओं ने आके काटा था क्या? हैं? तो उस पे भी बनना चाहिए, हर चीज पे बनना चाहिए. ये मैंने विनोद को उसी टाइम बोला था, पिक्चर क्या, अगर आप इस पे जाके देखो, क्योंकि मेरे को कमेंट्स के लिए इनवाइट किया गया, that he has to serialize it, he has to go into detail of every one of the killings that was done. और अभी देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है. अभी रणदीप हुड्डा को कास्ट किया गया है वीर सावरकर पे पिक्चर के बारे में. वो अगला सुपर हिट होने वाला है. हाँ, यही पिक्चर्स चलेंगे अब. बिल्कुल सही, परफेक्ट. अच्छा, अब आप मुझे बताओ, पंजाब के बारे में आते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स भी डिस्कस करते हैं. पंजाब में इज इट अंडर केजरीवाल और इज इट अंडर मान? Obviously it's under Kejriwal, no? So Maan is just a nominal figurehead there, like Manmohan Singh ji. हाँ, but it doesn't. See, look, all these people are saying कि मान और केजरीवाल के बीच में झगड़ा आने वाला है. मैं बोल रहा हूँ नहीं आने वाला है. I think Man's greatest asset is he knows his limitations. He knows he has a drinking problem. He knows he will not be able to wield authority. I think Raghav Chadha is going to be the deputed viceroy
of Kejriwal to Raghav Chadha will be the de facto chief minister, but who will defer on all major decisions to Kejriwal. But Bhagwant Mann will be the face, because you have to have a Sikh chief minister out. But I don't think Bhagwant Mann will be given any pass. And ये जो कहते हैं कि ये border state है, और ये जैसे मैं रोज सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ कि it's not safe in the hands of Kejriwal, a person like Kejriwal, आपके उसके बारे में क्या views हैं? I agree 100%, but I am revising my views, because remember, Congress has refused to give up on its lefty ideology. Before, they used to be an ideologically flexible party. Under Rahul Gandhi, they've been an ideologically inflexible party. But this is, this is like मैं जैसे इसकी सराहना करता हूँ, आमिर खान की सराहना करता हूँ कश्मीर फाइल्स के बारे में अच्छी चीजें बोलने के लिए. If AAP turns pro-Hindu, and if they actually do good governance in Punjab, we should appreciate it. You think he'll be able to handle the pressure from Canada, UK, Khalistan ka pressure? That is the big question. I'm going to see. I'm not going to give them a free ticket, but if they do it, I would say they're definitely a worthwhile opposition party to start voting for, to start looking as an alternative. Because see, for me, I have always believed that if Hindus can incentivize pro-Hindu policies, okay, what is the issue with the Congress and the TMC and SP? हम जो भी उनके लिए करें, they are not going to be pro-Hindu anymore. Congress used to be an extremely pro-Hindu party. अरे आधे से ज्यादा मुसलमान के खिलाफ दंगे जो होते थे, वो कांग्रेस ही तो करवाता था. But today, no matter how much we try TMC, SP, because they're so addicted to the Muslim vote bank and the Congress in Kerala, you can't wean them away. So if AAP is a party that you can wean away and create, हमारा भी redundancy measure, हर चीज में redundancy होना चाहिए ना. एयरक्राफ्ट में तो क्वाड्रुप्लेक्स रिडंडेंसी होता है, यानी कि एक चीज हो तो उसका बैकअप होता है, वो फेल हो तो उसका बैकअप होता है, 4 बैकअप होते हैं. तो अगर बीजेपी इलेक्शन हार गया, आई वुड मच रादर लूज इट टू अ मॉरली फ्लेक्सिबल पार्टी लाइक आप दैट इज विलिंग टू बी प्रो हिंदू, that can be incentivized through money or whatever to be pro-Hindu, than parties like the TMC, Congress or SP which can never be incentivized to be pro-Hindu. अच्छा, अब अभिजीत, ये बीरभूम हुआ और मैंने सुना है 24 किलिंग्स हो चुकी हैं वेस्ट बंगाल में, या कहीं अब अच्छा, I'll have to go now. बस 1 minute, last question. एंड ये जैसे रेप्स होते हैं तो ये पॉलिटिशियन करने लग जाते हैं, ये तुम्हारा रेप, ये मेरा रेप, ये तुम्हारे स्टेट का रेप है तो मेरा रेप, ये करते हैं, या किलिंग्स होती हैं, और दलित भी इनका स्टेट वाइज होता है. तो आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या क्वालिटीज चाहिए होती है पॉलिटिशियंस में टू be like this, the way they behave? What qualities are needed in a person? They have to be callous, cruel, what they need? No. Moral flexibility. See, what you see as a negative, I see as a positive. Understand, it is this moral flexibility that has prevented India from going to civil war. When you end up being ideologically rigid like Congress or TMC or SP, you will end up in a civil war situation like Sri Lanka. So I have no issues with moral flexibility, just as I have no issues with ideological flexibility. My problem is against those parties that refuse to be ideologically flexible. ठीक है ना, कि जैसे कि आप देखो, आपने कुत्ता पाल के रखा है, कुत्ता को आप कैसे, अगर कुत्ते ने भाऊ बोला तो बोलोगे नहीं बैड बॉय, और अगर कुत्ते ने बोला तो बोलोगे अच्छे बच्चे ग्लूकोज बिस्किट. ठीक है. अब ये क्या है, इसमें कांग्रेस, टीएमसी और एसपी ऐसे पार्टी बन गए हैं, रॉटवाइलर की तरह हैं. तुम उनको बिस्किट भी दोगे तुम. So there are dangerous dogs that need to be put down for the public safety, and there is good behavior in dogs that should be encouraged. Thank you so much, Abhijit. Thank you, and see you. May the blessings of Jesus be on all your heathen viewers, and hopefully they will see the light of the one true God in Christ. Thank you, and please आइए और खाना बनाइए मेरे घर. आइएगा.
ओके, नमस्कार मेरे नमस्कार। भेजा भेज दो। भेज अरे रही मेरा हूँ, भेजा भेज दो, भेज मेरा भेजा फ्राई हो रहा है, सो आई नीड भेज टू रही हूँ। ईट भेजा। आई मैंने एम, इतना भेजा तुम्हारे प्रोग्राम पे निकाल दिया है, मेरे को अब भेजा खाकर ही वो वापस आएंगे। अभी भेज रही हूँ, वेट कर रही हूँ मैं भी। ओके जी, नमस्कार। बाय बाय, लव यू, बाय। बाय।